guys, welcome back to my channel Taruneet. I hope all of you are doing well. You all are great, safe, happy at your place. So from the title आपको पता लग गया होगा कि this is a Valentine look. Yes, so Valentine is almost around the corner. So I have created this look with some subtle eye makeup and bold lips, red lips. That means Valentine है तो red lips बिल्कुल एकदम it will look perfect. This is like a ultra glam Valentine look. So if you want to know how I created this look, please keep on watching. So firstly, I'm going to moisturize my face, which is very important for the skin. Whatever skin type you have to moisturize your skin. Whether it's winters, summers, you have to moisturize your face. Alright, so now I'm going to apply this one, Garnier vitamin C serum. Right now these days serums plays a very important role in makeup, because they hydrate your face so much. What I'm going to do is I'm going to take it 2 or 3 drops. I'm going to activate the serum like this, and then I'm going to like this. Next I'm going to even out my skin. मैं color correcting करूँगी. Alright, जिनके face पे color correcting करने की need नहीं है वो ना करें. They can skip this step, but on my face it's needed because आप देख सकते हो dark circles हैं और कुछ pigmentation है, कुछ redness है. So I'm going to cover the redness with this green color corrector, and with this orange color corrector I'm going to hide the dark areas like under eyes and some pigmentation right here. Now I'm going to apply this primer. So आप primer color correcting से पहले भी यूज़ कर सकते हो, आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो, कोई issue नहीं होता है. Alright, but foundation से पहले यूज़ करना है. So I'm going to take like a tiny bit of it. I'll show you, like a pea size amount. I'm going to warm this up a little, and then so I forgot to moisturize my lips. ये भी बहुत important है. Now the next thing is to apply the foundation. So I am trying for the first time, it's L'Oreal Paris Infallible 24-hour matte cover foundation. So I'm going to take like a little amount because मुझे नहीं पता ये foundation थोड़ी apply होगी, ज़्यादा apply होगी, blendable या full coverage तो लिखा हुआ है, but let's see. So what also I'm going to do is मैं इसमें ये स्ट्रोबिंग क्रीम अप्लाई करूँगी. आप स्ट्रोबिंग क्रीम वैसे भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक जैसे हमने अभी अप्लाई कर ली एंड देन फाउंडेशन अप्लाई कर ली. बट व्हाट आई डू इज़ मैं मोस्टली जो है, कभी कभी मैं वैसे भी अप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली जो है मैं फाउंडेशन के अंदर ही मिक्स करती हूँ. फाउंडेशन में ये चीज़ एंड एक और चीज़ मैं जो है वो मिक्स करती हूँ, दैट इज़ द सीरम. आई रियली लाइक इट. सो मैं इसमें लाइक 2-3 ड्रॉप्स जो है सीरम के मैंने मिक्स कर दिए हैं. देन आई एम गोइंग टू वार्म एंड मिक्स दी फाउंडेशन. लाइक जो भी मैंने 2-3 चीज़ें मिक्स करी हैं उन्हें मैं जो है ऐसे मिक्स कर दूँगी. वार्म भी हो गई जो फाउंडेशन है और मिक्सिंग भी हो गई, राइट. सो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको लाइक ऐसे ही रैंडम डॉट्स कुछ यहाँ पे बना लूँगी. एंड देन आई एम गोइंग टू टेक द ब्यूटी ब्लेंडर. आई एम गोइंग टू स्टार्ट ब्लेंड इट आउट. टेक टाइम वाइल ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग में आप अच्छा टाइम दीजिए ताकि आपका जो मेकअप है वो खिल के आए और प्रॉपरली ब्लेंडेबल और नेचुरल लगे. ऑलराइट.
नाउ द फाउंडेशन इज़ सुपर गुड. बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है फाउंडेशन. फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ करी एंड आई रियली लाइक इट. उतना ही जितना मैंने लिया था वो पूरा का पूरा नेक पे एंड इस पे कवर हो चुका है. अब मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर, क्योंकि मैंने अंडर आइज पर जो है फाउंडेशन अप्लाई नहीं करी है, क्योंकि मैं डबल लेयर नहीं चाहती हूँ. आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड कंसीलर, फोटो फोकस कंसीलर. अब हम सेट करेंगे अपने फाउंडेशन को विद अ लूज पाउडर. सो आई एम यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन लग्जरी पाउडर, बनाना पाउडर. सो मैं स्मॉल पाउडर ब्रश के साथ आई विल बी टेकिंग ऑन माई ब्रश, टैपिंग ऑफ द एक्सेस. आई एम गोइंग टू सेट माई अंडर आइज फर्स्ट. मैं एक फ्लफियर पाउडर ब्रश लूँगी और थोड़ा सा banana powder लेके I'm going to roll all over my face. Now I'm going to little bronze up my face. So उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ L'Oreal Paris का bronzer. Just a little, not that much. Now I'm going to blush up my face with this L'Oreal Paris blusher. So now I'm going to do my brows. So for that I'm using this SFR color brow palette. It comes with the brush, and this is how it looks. So the brows are done. And now let's move on to the eye makeup. That will be subtle for sure. For that I'm using this Makeup Studio 39 color eyeshadow palette from Doro Girl. So firstly I will be taking a brown shade. Let me just zoom in out ताकि आप लोग काफ़ी क्लियरली देख सको. सो ये जो क्रीज है आई हैव डन विद अ ब्राउन कलर. लेट मी शो यू विच ब्राउन कलर आई हैव यूज्ड. आई हैव यूज्ड दिस ब्राउन कलर. आप देख सकते हो दिस इज़ लाइक अ मीडियम ब्राउन शेड. ऑलराइट, सो नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग जस्ट नेक्स्ट टू इट this one. It's a kind of a maroon brown shade. So I'll be going just on the ends of my crease, alright, just to intensify it. That's it, only this portion. So I'll be taking this shade right here on my fingers. So this will be the shade and मैं इसे अपने eyelid पे लगाऊंगी. Alright, so this is what the only thing I'm going to do with the eye shades. You can see that. That's it. I'm going to take that brown and that maroon brown shade and I'm going to apply it under my lower lash. Now I'm going to tight line the upper lashes. Now I'm going to apply this kajal just on the corners of my eyes, lower lash line, you know, like this. On the half of my lower lash I'm going to apply this, not white, this is a skin color kind of, you know, nude color I'm going to apply. So I forgot to tell you which kajal I have used. So I've used this Nykaa 24/7 kajal, and the nude kajal that I have used is from Catrice Cosmetics. Now I'm going to line my eyes with this L'Oreal Paris Super Liner Superstar Duo Designer. Alright, so I'm going to line it.
नाउ मैं लैशेस अप्लाई करूँगी बट ऑफ द कैमरा। लैशेस जो हैं वो मैंने लगा ली हैं, आप देख सकते हो। आप लैशेस अगर नहीं भी लगाना चाहते हो दैट्स टोटली योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। आप ओनली मस्कारा भी अप्लाई कर सकते हो, बट दिस इज़ लाइक अल्ट्रा ग्लैम वैलेंटाइन लुक, सो दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड द false eyelashes. I'm also not a very big fan of false eyelashes, but sometimes it looks good. I am going to just apply a little bit of mascara on my lower lashes. So I'm going to highlight my face. For that I'm using this AOA highlighter. और अब मैं ये स्मॉल ब्रश से इसे मैं अपने इनर कॉर्नर से भी अप्लाई करूँगी। आप इस हाइलाइटर की लुक देख सकते हो, दिस इज़ अमेजिंग आई वुड से। So now I am going to line my lips and we are doing this bold lips. It's Valentine, so I think जो red lips हैं वो एकदम perfectly suit करेंगे इस look के साथ. So I'm going to line my lips and then I'm going to apply the lipstick. Now I'm going to apply this lip color from MAC. This is in the shade Feels So Grand. This is Retro Matte Liquid Lip Color. So lastly I'm going to apply this makeup fixer. This is from Faces Canada. So this is the final look. I hope you like this look and this looks amazing. I am actually liking this look and this foundation is amazing. This highlighter is amazing and I hope you love this subtle eye look. So I hope you like this look, and if you like this look please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel for more such videos. So I'll see you in my next video. Till then, take care, bye. And happy Valentine's Day to all of you.